जवाकुसुम संकाश्यम कश्यपेयो महादुतिम ध्वंतारी सर्वपापघ्न प्रणतस्मै दिवाकरम्। I prostrate to that Daymaker, who is deep red-colored, the son of Kasyapa, who is radiant and destroyer of all sins. वाराणसी में मां गंगा के पावन तट पर इस ग्रहण का अनोखा विस्मयकारी अलौकिक अवलोकन चमत्कारिक रूप से रोमांचकारी 22 जुलाई को प्रातः 6:24 से 6:27 तक लगभग 3 मिनट से ज़्यादा समय का सूर्य वाराणसी के क्षितिज से गायब हो जाएगा। आइए हम आज इस विलक्षण दृश्य के बारे में थोड़ी चर्चा करें। पूर्ण सूर्य ग्रहण प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत अनोखा नज़ारा है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। पूर्णता के समय देखे जाने वाले सूर्य किरीट की मनमोहक छवि मन को छू जाती है। यह एक दुर्लभ एवं अनोखी खगोलीय घटना है, इसीलिए कालांतर से यह मानव के मन को भय एवं दुश्चिंता से उद्वेलित करता रहा है। We thought maybe it was Lord Krishna who had taken out his divine chakra, or maybe it was the evil demons Rahu and Ketu who had eaten the sun. Another explanation was that the hungry child Sankatmochan Hanuman ji ate the sun, thinking him as a fruit. Extraordinary events such as the disappearance of the sun invokes extraordinary imagination of the human mind to explain. लेकिन वैज्ञानिकों के लिए इसका अपना अलग ही महत्व है। Today we know that the moon covers the sun by standing in front of the earth. The moon is an opaque, spherical chunk of matter that has no light of its own. We see the moon because it reflects the sun's light. The opaque moon casts the shadow on the earth to create the eclipse. An observer situated on the path of that shadow is able to see the eclipse of the sun. As the moon revolves in its orbit, it comes between the sun and the earth on every new moon, and the earth comes between the moon and the sun on every full moon. But we do not see an eclipse every month. This is because the lunar orbit is tilted by 5 degrees to the ecliptic plane in which the earth circles the sun. ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों से पर्दा उठाने में सूर्य के अध्ययन ने आधारभूत भूमिका अदा की है। 22 जुलाई 2009 का ग्रहण इस सदी का दीर्घतम पूर्णता काल का ग्रहण है। इसके बाद 11 जून 2132 का ही ग्रहण इससे अधिक पूर्णता काल का होगा। इस ग्रहण का पूर्णता काल जापान के दक्षिण पूर्व में बोनिन द्वीप में 6 मिनट 39 सेकंड तक का होगा। ग्रहण का परिमाण जो कि सूर्य का चंद्रमा द्वारा आच्छादन का अंश दर्शाता है वह 1.08 है। पूर्णता पथ की अधिकतम चौड़ाई 250 किलोमीटर है। वैसे तो सूर्य ग्रहण का पूर्णता काल अधिक से अधिक 7 मिनट 31 सेकंड तक हो सकता है, लेकिन अब तक ज्ञात सर्वाधिक पूर्णता काल 20 जून 1955 के ग्रहण के समय था, जो कि फिलीपींस में 7 मिनट 28 सेकंड तक देखा जा सका। भारतीय उपमहाद्वीप में इस ग्रहण की पूर्णता का पथ गुजरात के समुद्र तट से आरंभ होकर उत्तर भारत होते हुए उत्तरी बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के उत्तरी छोर, केंद्रीय चीन से होकर प्रशांत महासागर में पहुंचेगा। आंशिक सूर्य ग्रहण समूचे भारत से देखा जा सकेगा। देश के प्रमुख शहरों में सूर्य ग्रहण की छाया इंदौर, भोपाल, सागर, जबलपुर, वाराणसी, गया, पटना, भागलपुर, जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी तथा डिब्रूगढ़ इत्यादि से गुजरेगी।
Not always is the Sun-Earth-Moon alignment exactly one line for the moon's shadow to go upon the Earth. The solar eclipse is a natural phenomenon. As the solar disk is covered by the moon, the splendors of the faint, colorful solar atmosphere are displayed in a majestic fashion. The colorful thin ring around the solar disk is the chromosphere, and the extended white halo is the corona. The solar eclipse provides the astronomers a rare opportunity to study these layers of the sun, which are usually obscured by the photosphere, the visible part of the sun. The solar corona is 1,000,000 times hotter than the visible solar disk, and astronomers are still trying to understand how the solar atmosphere is heated to such high temperatures from a cooler photosphere. 1868 के ग्रहण से ही सौर भौतिकी का भारत में जन्म हुआ, जब पहली बार स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग हुआ। इससे सौर वर्णक्रम में एक नई रेखा की पहचान हुई, जिसका नाम हीलियम दिया गया। याद रहे कि हीलियम का आविष्कार पृथ्वी पर इसके लगभग 25 वर्षों बाद ही हो पाया। The sun is an average star. It was born a few billion years ago, and it will die a few billion years later. RCW 108 is a region where stars are actively forming about 4,000 light years from Earth. This is a complicated part of our galaxy that contains young star clusters, including one that is deeply embedded in a cloud of molecular hydrogen. In Chandra's X-ray image, over 400 sources of X-ray light are seen. Many of these X-ray sources are young stars undergoing massive flaring, just as our sun did billions of years ago. This composite of data from NASA's Chandra X-ray Observatory and the Hubble Space Telescope is another look for NGC 6543, better known as the Cat's Eye Nebula. This famous object is a so-called planetary nebula that represents a phase of stellar evolution that the Sun should experience several billion years from now. When a star like the Sun begins to run out of fuel, it becomes what is known as a red giant. In this phase, a star sheds some of its outer layers. A fast wind streaming away from the hot core rams into the ejected atmosphere, pushing it outward and creating the graceful filamentary structures seen with optical telescopes. In the case of the Cat's Eye, material shed by the star is flying away at a speed of about 4 million miles per hour. The hot core left behind will eventually collapse to form a dense white dwarf star. Chandra's X-ray data of the Cat's Eye, which are seen as blue in this image, show that its central star is surrounded by a cloud of multi-million degree gas. Structures in optical light by Hubble are colored red and purple. By comparing the two, astronomers determined the chemical composition in the region around where the hot gas is found is like that of the wind from the central star, but it is different from the cooler outer material. हम सब जब बेसब्री से सूर्य ग्रहण को कैमरे में कैद करने को आतुर होंगे, लाखों लाखों लोग मां गंगा में डुबकी का लुत्फ उठाकर अपने शाश्वत धर्म का पालन कर रहे होंगे।